suggest that a pentagonal plate of side 50 mm has a central equilateral triangle hole of 40 mm side, with the side of plate and that of triangle parallel to each other, and the plate is kept on horizontal plane on this side. The side is inclined at 30 degrees to the reference plane, front reference plane, which is vertical plane. If the highest point of the plate is 40 mm above the HP, determine the angle. The plate makes with HP project. Determine the angle which the plate makes with horizontal plane and project the triangular hole in all the views. This is the requirement. First, we need to draft a reference. Now we have to present pentagon with a triangular hole. So we are going to take a perpendicular line to the reference what we had created, and we have to present a pentagon over there. So it is having edge length of 50 mm, so I am taking 50 mm over here. अब यहां से मुझे पूरा पेंटागन क्रिएट करना है. What is the angle for pentagon? It is the external angle should be 72, internal angle should be 108. This is 50 mm edge length. edge length. Now I want to have an arc from here. यहाँ से मैं दो arcs create करूँगा. Those arcs are going to match at a point which is going to be the next point for pentagonal plate, और उसे join कर देना है आपके regular pentagon के shape के साथ. Now I need to note positions also. I'll be considering A, B, C, D and E for pentagon. अब हमारा टास्क क्या है? टू ड्राफ्ट अ ट्राइंगल एट द सेंटर. तो हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे इस जियोमेट्री का? फॉर दैट वी आर हैविंग द कंसेप्ट दैट वी हैव टू मैच अ कॉर्नर विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट एज. तो हम एक कॉर्नर और सामने के एज के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. In similar manner, I am going for other edge also. Now this position is going to be centroid of triangle also. ठीक है, तो ये पोजीशन भी ट्राइंगल का, जो पेंटागन का सेंटर बन रहा है वही ट्राइंगल का भी सेंटर बनेगा. You can take two positions only, वो भी चलेगा, but right now we are drafting it in such way that it should present all the criteria. इसलिए मैं तीनों साइड से दिखा रहा हूँ. ठीक है. Now we are aware that a triangle is have equilateral triangle is there which is having edge length of about 40 mm. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? We are forming a line. एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन क्रिएट कर रहे हैं. उस रेफरेंस लाइन पे हमें 40 mm हाइट चाहिए.
at the distance of h by 3. Why we are dealing with this kind of criteria? Because we are aware that whenever a triangle is there, in that triangle, if I want to have a centroid, then that centroid is going to be at the height h by 3 from the larger edge. Larger edge से वो कितने distance पे होता है centroid? h by 3 distance पे होता है, and this distance is going to be 2h by 3. If I sum it up, it is going to be h, which is h by 3 plus 2h by 3, 3h by 3. So it is going to be h. ये हमारा criteria है. So h by 3 is the distance. So you can refer that distance also. And if you are dealing with the drafting criteria, then you can have this roller scale. You can move besides your region to find out 20 expansions, but it is better to have h by 3. तो अभी सोचिए, if your edge length is over here, we'll get the position. Now I can draft a vertical line which is having the length of 40 और वो 40 कैसे लेना है? From the position we will move upside for 20 units and downside for 20 units. Okay, so this is the edge. Now if I want to have the triangle drafted, I am going to have the dimension of edge. It is equilateral triangle, so all its edges are going to have same length. So now I have got the position of third point also. I'll connect all those points and name those points. Okay, so this is going to be the criteria. इसका नाम हम क्या देंगे? We can take PQR also. PQR भी consider कर सकते हैं. Now the regular procedure starts. उसमें हमें क्या करना होता है? We need to trace all points in the front view. तो हम लोग सारे points को front view में trace कर रहे हैं. After that we have to go for inclination observations. तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू पोजीशन हो गया, वहाँ पे हम नोटेशंस दे देंगे. दिस इज गोइंग टू बी ए डैश ई डैश, दिस इज गोइंग टू बी पी डैश आर डैश, दिस इज गोइंग टू बी डी डैश बी डैश, this one is going to be q dash, this one is going to be c dash. Now this one is inclined in such way that its uppermost point, the highest point of the plate is 40 above the horizontal plane. तो theta is not given, but we have to identify it. तो हम लोग क्या करते हैं? वी आर टेकिंग अ रेफरेंस पोजीशन ओवर हियर विच इज इंडिकेटिंग ए डैश ई डैश. ए डैश ई डैश को इंडिकेट करता है. यहां से हम 40 ऊपर एक और रेफरेंस क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा. 40 ऊपर एक और रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. ये रेफरेंस हमारा क्रिएट हो गया. नाउ वी नीड टू ट्रांसफर दिस ए डैश ई डैश टू सी डैश ओवर हियर. यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक this dimension because theta was not given but the information was like that कि उसका जो end point है highest point of the plate it is 40 above the HP. तो हमने क्या किया? We had position 40 line in the reference and now we are transferring that position. तो ये पोजीशन रहेगा सी डैश. अब हम इन्हें कनेक्ट कर लेंगे ए डैश ई डैश और सी डैश को. नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल अदर पोजीशंस. ये फर्स्ट पोजीशन रहा जो पी डैश आर डैश को इंडिकेट कर रहा है. ये सेकंड पोजीशन रहा जो डी डैश बी डैश को ट्रांसफर कर रहा है. ये थर्ड पोजीशन रहा जो क्यू डैश को डिफाइन कर रहा है और एंड पॉइंट इज ऑलरेडी देयर. तो ये रहेगा ए डैश ई डैश पी डैश आर डैश डी डैश बी डैश क्यू डैश. Now I'll trace all points in the top view. सारे पॉइंट पोजीशंस को टॉप व्यू में हमें इंडिकेट करना है. So I'll be tracing it like this.
और यहाँ से हमें सारे पॉइंट्स को top view to top view transfer करना है. So I'll be going for this position transfers. You can extend those lines from the reference later on if the scale is having less length. You can extend it afterwards. So यहाँ से अब extend कर लीजिए. और यू कैन हैव द पोजीशन आइडेंटिफिकेशन, जो भी पॉइंट पोजीशन है उसी के लिए एक्सटेंड करेंगे तो भी चलेगा. देयर इज नो नीड टू क्रिएट दिस मैश काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स. तो यहाँ पे मिलेगा ए, यहाँ पे मिलेगा ई. if I'll be moving ahead, I'll be finding B over here. Let me mention those name also. B. I'll be having C over here. I'll be having D over here. Over here I'll be having D, and E is already there. So I'll be first drafting the pentagon. ये हो गया pentagon. Now I have to draft triangle. For that I'll go for point P. P is over here, Q is over here, and R is over here. तो ये होगा P, Q और R. At which angle it is mentioned? There is no angle mentioned, but the data was suggesting that its highest point is going to be at 40 mm distance. So this distance what we had taken is 40 units, 40 mm. And then we had drafted a line and we had sketched the C dash. ये हो गया दूसरा position. So now you can attempt the third position for inclination with vertical plane and you can complete the problem.